शक्ति रैली है उसमें भी प्रधानमंत्री संबोधित करने वाले हैं। और हमारी संवाददाता आयशा खानम यहीं पर त्रिशूर में इस रोड शो में उपस्थित हैं, उनसे फोन लाइन पर जुड़ते हैं और उनसे अपडेट लेते हैं। आयशा, रोड शो की शुरुआत हम देख रहे हैं, लोगों में जबरदस्त उत्साह, फूलों की बारिश। आयशा जी हाँ, बिल्कुल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो शुरू हुआ यहाँ पर त्रिशूर के सरकारी अस्पताल के पास से, और अब काफिला आगे बढ़ रहा है और खचाखच भीड़ यहाँ पर जमा है। लोग दूर दूर से पहुंचे हैं, केरल के कोने कोने से लोग यहाँ पर पहुंचे हैं और हम देख सकते हैं कि सड़कों के दोनों तरफ लोग प्रधानमंत्री का स्वागत फूलों की वर्षा करते हुए कर रहे हैं, जो हमेशा ये नजारा देखने को मिलता है जब भी प्रधानमंत्री का इस तरह का रोड शो होता है। इस वक्त प्रधानमंत्री का जो काफिला है वो पास हो रहा है वडक्कुनाथम मंदिर के सामने वाले हिस्से से, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत में हजारों संख्या में लोग खड़े हैं। और आप देख सकते हैं पीछे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक विशाल पेंटिंग बनाई गई है, जो सैंड यानी मिट्टी, पूरे देश के कोने कोने से मिट्टी के साथ कलर्स मिक्स किया गया है। एक सैंड आर्टिस्ट ने ये तस्वीर बनाई है। तो ये तस्वीर से जो है यहाँ पर लोग प्रधानमंत्री को अपनी तरफ से धन्यवाद देना चाहते हैं और प्रधानमंत्री का काफिला अब आगे बढ़ रहा है। और सड़कों पर लालचंद जो हमने देखा सुबह से लगातार, हालांकि ये रैली महिलाओं के लिए है, तो हमने ये भी देखा कि आज पुरुष जो है वो बहुत ही चिविलरस रहे और महिलाओं को अंदर जाने के लिए रास्ता बना रहे थे और वो कह रहे थे कि महिलाओं का दिन है, महिलाओं की रैली है, उन्हें जाने दीजिए। तो इस तरह से एक में उत्साह देखने को मिला और महिलाओं को सपोर्ट करते हुए पुरुष भी उन्हें रैली में जाने के लिए रास्ता बनाते नजर आए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला जो है आगे बढ़ता हुआ जा रहा है अभी इस वक्त। और ये स्वराज राउंड है त्रिशूर का, जो वडक्कुनाथम टेम्पल का जो मैदान है जहां पर त्रिशूरपुरम होता है, मशहूर त्रिशूरपुरम होता है। और ये जो उत्सव है बहुत ही भव्य उत्सव और बहुत ही मशहूर विश्व प्रसिद्ध उत्सव यहाँ पर होता है त्रिशूरपुरम। और ये मैदान में ही प्रधानमंत्री की रैली है जहाँ पर प्रधानमंत्री महिलाओं को संबोधित करेंगे। और इस वक्त आगे बढ़ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लोग जो है उनका स्वागत कर रहे हैं। मोदी मोदी के नारे सुनाई दे रहे हैं और कई लोग जो है फूलों की वर्षा करते हुए नजर आ रहे हैं। और आप गौर से देखिए लालचंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो काफिला बढ़ रहा है, आसपास आप कई जगहों पर सोने की दुकानें देखेंगे। यानी जैसे कि मैंने बताया, त्रिशूर एक गोल्डन हब है, गोल्ड हब है, गोल्ड ट्रेडिंग के लिए जाना जाता है और यहाँ के कारीगर जो है बहुत ही जाने जाते हैं, मशहूर हैं त्रिशूर में यहाँ के कारीगर। तो ये जो तमाम स्किल्ड वर्कर्स हैं, ये केंद्र सरकार की कई योजनाओं का लाभ भी उठा चुके हैं और कई युवक जो है अब केंद्र सरकार की स्किल्ड स्कीम्स का योजनाओं का लाभ उठा रहे हैं और अपना जो पारंपरिक जो बिजनेस है उसको आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो काफिला है आगे बढ़ रहा है, हजारों की संख्या में युवक यहाँ पर जुटे हैं। कुछ समय पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी त्रिशूर में युवक कॉन्फ्रेंस को एड्रेस किया था। देखिए, प्रधानमंत्री का ये तीसरा दौरा है त्रिशूर में और युवक कॉन्फ्रेंस के दौरान प्रधानमंत्री ने युवकों को संबोधित किया था, उनसे कनेक्ट किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हर योजना और हर विजन का हिस्सा है युवक और ये न्यू इंडिया की नींव है। इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा युवाओं को संबोधित करते हैं और अब विमेंस बिल के जरिए, विमेंस रिजर्वेशन बिल के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महिलाओं को विमेन लेड डेवलपमेंट का एक अहम हिस्सा, एक अहम कड़ी बनाने का रास्ता खोल दिया है। और ये विजन अब केरला की महिलाओं को काफी उत्साह देता है, काफी उत्सुक है महिलाएं। और कल हम कुछ महिलाओं से बात कर रहे थे तो उनका ये कहना था कि अब प्रधानमंत्री ने हमें तो तोहफा दे दिया, लेकिन अब महिलाओं की बारी है कि वो प्रधानमंत्री को रिटर्न गिफ्ट दे। और महिलाओं ने एक उद्देश्य बना लिया है कि केरल में पहली महिला मुख्यमंत्री जल्द से जल्द बनाएंगे। कम से कम एक दशक का समय तो लगेगा ही यहाँ पर एक मुख्यमंत्री बनने के लिए, क्योंकि एलडीएफ और यूडीएफ ने लगातार यहाँ पर वादे करते रहे, कई बार महिला मुख्यमंत्री का नाम प्रोजेक्ट किया, लेकिन जैसे ही चुनाव होते थे सब वादे भूल जाते थे। तो अब लोगों ने, महिलाओं में ये उत्साह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो विमेन रिजर्वेशन बिल, जो महिला
रिजर्वेशन बिल पारित किया है, उसके बाद कई महिलाएं पॉलिसी डिसीजन मेकिंग में आगे आएंगी। और केरला एक लिटरेट स्टेट है और यहाँ पर लिटरेसी रेट सबसे हाई है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि केरल में शुरू से महिलाओं का एक सेल्फ हेल्प नेटवर्क भी है जो काफी मशहूर है। यहाँ पर इर्रेस्पेक्टिव ऑफ पार्टी लाइन्स यहाँ की महिलाएं जो है काफी एंटरप्रेन्योरशिप के लिए, एंटरप्रेन्योर स्किल्स के लिए जानी जाती हैं। तो अब जब ये उनके लिए ये रास्ते खोल दिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, तो जाहिर है महिलाएं अब विकास में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगी और देश की जो इकोनॉमी है उसमें भागीदार बनेंगी। तो ये जो प्रधानमंत्री की जो आज की रैली है, इसका अहम उद्देश्य यही है कि महिलाएं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपनी तरफ से धन्यवाद कहेंगी और अपना प्रधानमंत्री का जो विजन है उसको अपने सपनों के साथ जोड़कर महिलाएं आगे बढ़ना चाहती हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो काफिला है आगे बढ़ रहा है। करीब 1.5 किलोमीटर के आसपास का ये जो रोड शो है, स्वराज राउंड का जो रास्ता है वहां से गुजरते हुए अब आगे बढ़ता जा रहा है और लोग उनका स्वागत कर रहे हैं। कल हमने देखा तिरुवत्तिरा जो महिलाओं का पारंपरिक नृत्य है यहाँ पर केरल में, खासकर उत्सव के दौरान महिलाएं ये परफॉर्म करती हैं। लेकिन प्रधानमंत्री के आने से पहले ये तमाम कल्चरल चीजें यहाँ पर देखने को मिली और प्रधानमंत्री के स्वागत में बहुत जोश और बहुत उत्साह यहाँ पर नजर आया। और मैंने देखा कि यहाँ पर त्रिशूर पूरम के दौरान जिस तरह उत्साह होता है, ठीक उसी तरह का माहौल क्रिएट किया गया और एक छोटा त्रिशूर पूरम का नजारा देखने को मिला। हमें लोग बता रहे थे कि जब प्रधानमंत्री की काफिले के लिए रास्ता बनाया जा रहा था तो ठीक वही उन्हें याद आ रहा था कि त्रिशूर पूरम के दौरान भी इसी तरह का नजारा देखने को मिलता है। तो प्रधानमंत्री को बहुत ही ट्रेडिशनल और बहुत ही पारंपरिक अंदाज में यहाँ लोग स्वागत कर रहे हैं और प्रधानमंत्री का काफिला आगे बढ़ता हुआ हम देख सकते हैं। और प्रधानमंत्री कुछ ही देर में जो इस ग्राउंड में जो मैदान है, चक्कीनाडो मैदान है, इस मैदान में प्रधानमंत्री महिलाओं को संबोधित करेंगे। देखिए, खास बात ये भी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद करने के लिए ये रैली है, लेकिन ये जो मैदान है, चक्कीनाडो मैदान है, ये त्रिशूर पूरम के लिए जाना जाता है। लेकिन केरल सरकार ने इस मैदान को लेकर भी राजनीति छेड़ दी है और इस मैदान की राजनीति ये है कि हर बार जब अप्रैल के महीने में त्रिशूर पूरम होता है तो सरकार इस मैदान को किराए पर देती है, जो मंदिरों के देवस्थान बोर्ड है। तो अब केरल सरकार ने इसका किराया 2 करोड़ से ज्यादा कर दिया है, जो मंदिर के बोर्ड इसको अफोर्ड नहीं कर सकते। तो इसको लेकर काफी विवाद रहा और इसको लेकर ये विरोध प्रदर्शन भी काफी चलते रहे। लेकिन सरकार, केरल सरकार जो है, सीएम सरकार लगातार कहीं ना कहीं इस तरह के उत्सव में हर्डल्स क्रिएट करती है, रोड़े लगाने की कोशिश करती है। तो ये एक जद्दोजहद चल रही है। तो बीजेपी के कार्यकर्ताओं का ये मानना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने से कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह है और हो सकता है एक स्टेटमेंट भी जाएगा कि जो लोग उत्सव पारंपरिक तरीके से मनाते हैं, जो परंपरा है केरल की 200 साल पुरानी परंपरा है, उसके साथ छेड़छाड़ ना किया जाए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमाम लोगों की भावनाओं की कद्र करेंगे। तो ये एक मैसेज भी प्रधानमंत्री देना चाहते हैं इस मैदान में रैली कर, इस मैदान में जो ये आयोजन किया गया है। तो ये बहुत ही खास एक विषय रहा यहाँ पर त्रिशूर पूरम के जो इस मैदान में जो है पिछले कुछ समय से ये विषय चलता रहा। तो ये एक स्टेटमेंट भी हम यहाँ पर कह सकते हैं। तो कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह है। कार्यकर्ताओं का यह मानना है कि त्रिशूर जो है केरल का उत्तर का हिस्सा है और त्रिशूर में बीजेपी ने अपना गढ़ और मजबूत बनाया है। यहाँ पर बीजेपी का वोट शेयर बढ़ा है और बीजेपी ये मानकर चल रही है कि आने वाले लोकसभा चुनाव में कम से कम 5 या 6 सीट, यानी केरल की 20 सीटों में से 5 या 6 सीट पर वो काम कर सकती है और त्रिशूर को बीजेपी केरल में अपना गढ़ बनाना चाहती है। और केरल में जो है, क्योंकि काफी एजुकेशन हाई है, युवाओं की संख्या है, एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स ज्यादा है, तो यहाँ के लोग समझते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो सबका साथ सबका विकास की जो योजनाएं हैं, वो तमाम योजनाओं के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के विकास की परिकल्पना करते हैं, एक विजन की परिकल्पना करते हैं। और हम देख सकते हैं कि कुछ समय पहले से ही विकसित भारत संकल्प यात्रा शुरू हुई और ये एक ऐसी यात्रा है जिसमें
राजनेताओं का या फिर पॉलिटिशियंस का कोई योगदान नहीं। इसमें महज अधिकारी जो हैं देश के कोने कोने तक पहुंच रहे हैं कि केंद्र सरकार की जो योजनाएं अभी तक लोगों तक नहीं पहुंची है, उन्हें उसके बारे में आगाह कराया जाए, उन्हें उनका लाभ उठाने के लिए कहा जाए। तो ये एक ऐसा मूवमेंट बन गया है जो स्कीम की सैचुरेशन करने के लिए। तो ये भी केरल में काफी उत्साह का कारण रहा और लोग बढ़ चढ़ कर केंद्र सरकार की योजनाओं का फायदा उठाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो कोशिश रही है, एक अमृतकाल भारत की जो कोशिश रही है, इस कोशिश में आज हम देखेंगे कैसे ये तमाम महिलाएं जो है प्रधानमंत्री के साथ, उनके विजन के साथ जुड़ेंगी। और स्टेज पर खास महिलाएं जो है आमंत्रित की गई हैं। इनमें पीटी उषा रहेंगी जो ओलंपियन है, और मीनू रहेंगी जो क्रिकेटर है, मीनू मनी जो क्रिकेटर है। ये युवा खिलाड़ी है एंड अभी उन्होंने इंग्लैंड में T20 में भारत की तरफ से कैप्टनसी की थी। तो ये युवा खिलाड़ी जो है वो भी स्टेज पर मौजूद रहेंगी। और बहुत ही दिलचस्प बात मैं आपको बताना चाहूंगी, लालटेन के स्टेज पर मारिया कुट्टी नाम की एक वृद्ध महिला, जो 80 साल की महिला है, जिन्होंने केरल सरकार के खिलाफ एक जंग छेड़ दी थी, क्योंकि इस महिला को अपने पेंशन के लिए दर दर भटकना पड़ रहा था। तो ये मारिया कुट्टी महिला ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। हाईकोर्ट से केरल सरकार को, सीपीएम सरकार को काफी फटकार लगी थी और हाईकोर्ट ने सरकार से कहा कि अगर आप एक वृद्ध महिला, एक मजबूर महिला की मदद नहीं कर सकते तो सरकार में बने रहने का क्या मतलब है। तो इस तरह से हाईकोर्ट ने फटकार लगाई थी। और आज मारिया कुट्टी को विशेष स्थान मिलेगा। मारिया कुट्टी जो है 80 साल की जो वृद्ध महिला है, वो प्रधानमंत्री से रूबरू होंगी और अपनी जद्दोजहद, अपनी जो फाइट है उसको वो प्रधानमंत्री को बताएंगे कि कैसे उन्हें मुश्किलों का सामना करना पड़ता है और अपने पेंशन के लिए उन्हें दर दर भटकना पड़ता है। तो ये तमाम महिलाएं हैं जो अपनी जो मुश्किलें हैं, जो अपने दर्द हैं, वो प्रधानमंत्री के सामने रखेंगी और बताएंगे कि कैसे प्रधानमंत्री का नेतृत्व उन्हें मोटिवेट करता है कि वो अपने हक के लिए लड़े और जो उनका हक है वो उन्हें मिले। लालचन, बिल्कुल। जिस तरह से आशा देख रहे हैं कि लोग झूम रहे हैं इस रोड शो के दौरान, फूलों की बारिश कर रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी हाथ हिलाकर अभिवादन का आदान प्रदान कर रहे हैं, और ऐसा लग रहा है क्या कि प्रधानमंत्री रैली स्थल तक पहुंच गए हैं क्या आयशा? जी, बस कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब रैली ग्राउंड के अंदर पहुंचेंगे। देखिए, मैंने बताया आपको ये स्वराज ग्राउंड है। ये मैदान जो है एक गोल चक्कर है और इसके अराउंड ही करीब 1.5 किलोमीटर का रास्ता है। प्रधानमंत्री जो वडक्कुनाथम मंदिर के 4 हिस्से हैं, 4 अलग अलग द्वार हैं, उससे गुजरते हुए उनका काफिला आगे बढ़ रहा है और कुछ ही देर में प्रधानमंत्री अंदर पहुंचेंगे और यहाँ आई 2 लाख से ज्यादा महिलाओं को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री पर जो फूलों की वर्षा जो बरसाई जा रही है, उत्सुक कार्यकर्ता है, जो लोग हैं त्रिशूर के और केरल के अलग अलग हिस्सों से यहाँ पर पहुंचे। देखिए, यहाँ पर आने वाले लोग ये महज पार्टी कार्यकर्ता नहीं है, इनमें से कई लोग जो हैं दूर दराज के गाँव से आए हैं और वो सुबह से लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंतजार यहाँ पर कर रहे थे। हम देख रहे थे कि अपनी अपनी जगह रिजर्व करने के लिए लोग एकजुट हो रहे थे और प्रधानमंत्री का भव्य और शानदार स्वागत उन्होंने यहाँ पर किया है। कुछ समय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब इस दक्षिण काडू मैदान के अंदर पहुंचेंगे और यहाँ भी प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत करने के लिए तमाम तैयारियां हमने कल से देखी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है यहाँ
जो मौजूद महिलाएं हैं, कई आशा वर्कर्स हैं, कार्यकर्ता हैं, ये तमाम महिलाओं को संबोधित करेंगे। हम देख सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त मैदान के अंदर पहुंच चुके हैं और प्रधानमंत्री सीधे स्टेज जाने के बजाय यहाँ पर लोगों के साथ, लोगों के रूबरू हुए हैं और उनके बीच चलते हुए उनका अभिवादन स्वागत करते हुए आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। सुरक्षा कड़ी की कल से त्रिशूर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे, क्योंकि कई जगहों पर कुछ विरोध प्रदर्शन भी हुआ था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पोस्टर्स को हटाने को लेकर, लेकिन इसके बाद सुरक्षा कड़ी कर दी गई है और इस कार्यक्रम में कोई अड़चन न आए उसकी पूरी व्यवस्था और सुरक्षा के बंदोबस्त, कड़े बंदोबस्त यहाँ पर हम देख सकते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अक्सर हम देखते हैं कि सीधा रोड शो के बाद स्टेज पर पहुंचते हैं, लेकिन यहाँ लोगों के बीच लोगों का अभिवादन स्वागत करते हुए उनके बीच से चलते हुए आगे बढ़ रहे हैं और महिला जो हजारों की संख्या में, जो लाखों की संख्या में यहाँ पर महिलाएं आई हैं, प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए उत्सुक हैं और कुछ देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्टेज पर पहुंचेंगे और उनका जो संबोधन है वो शुरू होगा। प्रधानमंत्री के सामने हम देख सकते हैं कि फूलों की वर्षा के साथ साथ फूलों का कारपेट भी बिछा जैसा नजर आ रहा है और प्रधानमंत्री लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए आगे बढ़ रहे हैं और हर कोई प्रधानमंत्री को करीब से उनकी एक झलक पाना चाहता है, उन्हें देखना चाहता है। यहाँ आए तमाम लोग उनका स्वागत कर रहे हैं। Introducing Fresh Hot Grills. The goodness of fresh veggies, real cheese, and a buttery crust. This has to be in the shots. This has to be in the shots. Question. Do you think the TMC will give Mahua a ticket to fight? Thank you very much. 2024. She will be a footnote in the pages of history. من علي في ناري جهنم خليدين فيها أولئك هم شر أبربرية. मैन ऑफ द ईयर अवार्ड लेके आए। कहाँ से? Look at him, exposed right now. But he's resign. Resign. Gender fluidity, भाई. नहीं, जब मन किया तो ये तो नॉन वेजिटेरियन वाला हो गया। What a bigot. नॉन वेज आप चिकन पाड़ते हो, जब मन किया आप मटर पनीर ले लेते हो। Biology is bigotry. You can't do it. Stacey, I've caught this hypocrite again. How can he as a woman be injured when a ball strikes the genitals? Good point. Why He has to women be a don't man. have anything between their legs. What? Change. Are you talking like the Chief Justice of India? Yeah.
Okay. Okay. The Congress is not a political party that belongs to one person. It belongs to the people of this country. It belongs to the family. No, it belongs to the people of this country. मैं आ रहा हूँ Now, what are you? भाई मैं आ रहा हूँ. You can disagree on it. But that's the idea of the way Congress has presented itself. If I want to say that, Anand is a blithering idiot, I will say, Arey Anand, you are the sun and the moon. Habibi. You are the alpha and the omega. The nuclear fission that happens on the sun. It is not because of the hydrogen atom splitting. reaction. It It is actually your farts coming out and igniting out in the. Can we upper please cut altitude. this? Thank you guys. Thank you Anand. Thank you Tehseen. Thank you for coming. Abhijit, can I call you Abhijit? Okay. Thanks for coming. हाँ. And Sushant. I'm Orijit, Orier, Arafat. Orietra. Arafat? Ori Arafat? I'm Orijit Arafat. Perfect. Orijit Orafat. Orijit यार, Arafat. Listen, So how does I am so disappointed. हमने सोचा था कि हमारा दोस्त होगा. He will be the hip and happening guy. This guy is such a loser. He's hanging around with people like us. The original Ori हाँ. is hanging around with the अमीरों का Ori है वो. ये गरीबों का ये Ori हमारा है. See, गरीबों I का think Ori. of myself as the intellectual unka Ori. Okay, that's nice. Because let's face it, just one person out here, any one of us, has a higher IQ than all of Ori's friends put together. Listen, Just not the early the part. only author among us is, I think, Anand. Abhijit. हाँ. How can we not meet my friend? Ah. Oh, my friend. Are you guys meeting in Barakatulillah, the... brother. Oh, my friend. Wow, this is so beautiful. So, Why are you using an Italian accent, brother? Inna Allah thina kafru min ali fi nari jahannama khalidina fiha ola ika hum sharu abrabriya. Inna Allah thina kafru min ali fi nari jahannama khalidina fiha ola ika hum sharu abrahiya. अच्छा बस this is not. Hello. How many times are they doing? Okay, I think Anand, this is not. ये कुछ हो रहा है. This is beyond. Yeah. From the river to the sea. From the river to the sea. Ori will be free. Ori will be free. Ori will be free. Okay, for our expat audience, if you don't know who Ori is, please Google and see. He's the latest thing. Okay, so this time, thank you for being part of the samosa, the real samosa caucus. Yes. Right, not that American version. Oh, before I forget. Huh. I have to, although I have embraced him with a bear hug that a bear would be proud of, I have to expose the shameless hypocrisy of this guy. Shameless hypocrisy. Poor thing. How? मैं पहले ही शुरू कर देता हूँ. See, such Islamophobia and homophobia happening on this podcast. Poor thing. So this guy identifies himself as a woman, right? हाँ. हैं? Yeah. साला Man of the Year award लेके आया ये. कहाँ से? Look at him. Look at him. Exposed right now. But he's resign. GQ. Resign. Gender The GQ. fluidity, भाई. नहीं, हाँ, जब जहाँ- मन किया तो ये हाँ, तो तो gender नॉन वेजिटेरियन fluidity वाला होता हो गया. What a bigot. He नॉन doesn't वेज accept gender आप fluidity. चिकन पाड़ते हो जब मन किया आप मटर पनीर ले लेते हो. हाँ, तो Biology that's is not fair. bigotry. Why You not? can't How do is it. it not fair? That's called buffet. Yeah, No, Butter once- Paneers of the world unite. Yeah, absolutely. No, but listen. भाई ये आपके हमने आपको तो नहीं रोका कि आप मटर पनीर खाओ. आप मटर पनीर आप खाते ही मटर पनीर हो. हम चिकन खाते हैं. हम मटर पनीर भी खाते हैं. यही गड़बड़ We are है. much चिकन पे. We are fluid in food. But are you going to return the award? I'm sorry, you have to. Why? क्या? Are you going to return the Man of the Year award? Why? No. हाँ, award वापसी. Award वापसी यहीं से शुरू होनी चाहिए. Award वापसी should मैं start. क्यों reward करूं? I just want to thank Barkat Rehan for giving me International Man of the Year award. This is ridiculous. He just That goes I, there. I see many men are now competing in women's sports. Correct. So it's only right that women also compete in men's sports. Must And win. And win. अच्छा. Now we- I agree. See, what kind of bigotry are you giving me? No, but men Apologize in or the- I'll get up and walk Oh, out. no, right no, now. don't walk out. Okay. It's No, too but early for women can compete. Let him walk off from here. Where अच्छा, will he before go? we start the No, topics, but one second. Women हम can कपड़ों compete. के बारे में बात Women कर can लें? compete, but not in the second trimester. So rude. Very See, rude. I, अच्छा, can you please explain I'm your having outfit and then septuplets we'll go first to trimester. first explain your outfit today.
See, I'm wearing a fairan to express my solidarity with the oppressed people of Kashmir. Okay. I'm wearing a keffiyeh to express my solidarity with the oppressed people of Gaza. And I was also bringing a placard to express solidarity with one expelled MP, but it doesn't suit this Elite audience. August gathering. August gathering, yeah. Okay. Commiserations. That's all I can say. Let's go to. But sorry, the 2 MPs are suspended. Again, Yeah, you're 2. very biased. Two. You only Yeah, stood up for I- one. yeah, this, sorry. this is Islamophobic. Yeah, it is. You didn't So stand up for the I second. want to stand up for both the MPs who've been expelled, one from Parliament and one from their party. Yeah, because rise of fascism in India, right? Yeah, because I just wanted to highlight all the axis of Mahishasuristic Huh. fascism across the world. Why are you I'm wearing very, these? like he's very Ori inspired, I'm very Ranveer Singh inspired. So Ranveer Singh, and I get that energy. So I'm very Ranveer Singh inspired, he's Ori inspired. Together we've got Bollywood out here, between Abhijit and me. The pants Please, are... yaar, don't you know the latest word? It's not Bollywood, it's Urdu wood, if you would please. Yeah. Which are Urdu ke bhi. And people don't realize it's Urdu is Indian. Urdu is an Indian language. हाँ, फालतू में anyway हाँ अभी आएगा So- mentions में hate. So when when Nidhi sent us the picture of where we were shooting, I thought if I wear this, I can gel in. Okay, perfect. And my shoes. Huh. If anyone, this is a warning, anyone steps on my toes, this is for them. See, he's intimidating us. Yes. He is. मतलब This वो भी is तो the है kind that of, the spike on what his Abhijit hair would call is matching The the spike on my BDSM hair or is matching the BDSM or spikes on whatever my... it is. BDSM. BDSM. The spikes on The his shoes shoes were, yeah. are matching the spike on his hair. On my The hair. spikes Yeah, on his yeah, hair. yeah. So it's all The spiky planned. look. He's wearing this full San Francisco Folsom Fair get-up. हाँ, and then Please now catch let's the go to expression the on Sushant. Sushant's face. Or Because nobody check the here shine. actually The knows Chandrayaan. what the San Chandrayaan. Francisco Yeah. Folsom Fair The is. sun and the Chandrayaan is landing out there. Yeah. हाँ. It's shining. Achha, but I really appreciate that all of you wear shoes today. There's no like it's chappal and sandal and shorts. ये नहीं एक वो बार हमारे को podcast- पहले बोला गया था हाँ. कि भाई आप ऐसे बी वेल ढंग के कपड़े। ठीक-ठाक तो पहने। घर में when तो I टीवी came शो in- कर रहे होते हैं when ऊपर I कोट came in पहना होता है shorts, नीचे they- शॉर्ट्स they- होती When है I You came were in told shorts to to be the well podcast, dressed it and was you peak came like summer, this. No. This is winter. Even though we're not As wearing good as well I could do, winter. yeah. No, he's very well dressed today. यार एक बार ये हुआ था यू नो देयर वाज सम टेलीविजन शो मैंने वही ऊपर तो पहना हुआ था ठीक ठाक कुछ नीचे शॉर्ट्स शॉर्ट्स पहनी हुई थी एंड देन दे सडनली सेड दैट ओके वी मस्ट स्टैंड अप फॉर समथिंग हाउ कैन आई Shorts. then I kind of tried to adjust that camera and I've got short so there's legs. a Congress This is what- spokesperson. I'm not making this. A top Congress spokesperson who would wear a jacket or a shirt on top, and below he would wear shorts and sit on his debates. Yeah, and the cameraman, being the cruel person that he is, took a long shot and posted it on social Yeah. media. And that poor spokesperson. He's not poor. the Let rich. me just tell, he's not poor at so all. that poor in the sense. Yeah. We're you know, using it हाँ. metaphorically. So He's a doctor also. and that spokesperson has had several such instances Yeah. where People have posted People have videos, videos and pictures. videos and posters. And you know, when such things happen, then you, at least for me, I can't then have eye contact with that person because I'm thinking of those visuals, images. those images. But what's the And moral of the story? Please treat your drivers with respect. That is the moral of the story. Yes. Don't do anything that you don't want your driver to post. Correct. And if you do things that you don't want your driver to post, please treat him with respect. Yes. Yes, absolutely. And then again, the elitist thing, jiske drivers hote hain. I don't have. I'm a Chauffeur. I came in a cab. Okay. Right. Okay, so now shall I pass this on so that, okay, so the new rules are that I don't get to ask the question and I'm not picking. So very democratic, in a fascist, Hindu Rashtra. homophobic, आगे बढ़ो, whatever country that in a this is not Mahishasuristic. democracy. Huh. You already decided the questions. The question. No, and no. you already put them out there, and now you are asking us to pick. The questions, so you've already decided. You so might as well ask. questions are from random suggestions which have been coming up that your next podcast, you might, one of the suggestions was please get Abhijit to smoke a cigar. Can you imagine? These are the kind of suggestions which came, but these It's a are good from, idea. We should Good run idea, it, no? yeah. As Cognac long and as you're cigar. only smoking the cigar and not doing anything else that anyone else did with cigars, with people in power.
Yes. You remember that meme with Bill Clinton? The Bill Clinton. Where he's sitting on a desk. Okay, this is and going the- in a and direction the- we need to keep the this line in a says- family entertainment, Yeah. okay? People of the 90s would know that there are two people in this photograph. There is also That's true. there's also a cigar photo of Indian person, Yes. Indian politician with a cigar. We shall not go into that. Do I start? So The cigar you all always pick gets one. you into trouble. All of you pick one, and then just pick any, and then read it, and then we'll start with It's Sushant. random, Abhijit. You don't need to do that. हाँ, just pick it. Do I also pick one? वो We all आटे pick की it. तरह गूंद रहा है उसको. हाँ, pick one. Pick. Pick two. Pick, and Sushant, we'll begin with him. Perfect. Left to right. Thank you. You have one or two? ठीक है? Look at him. He picked two. देख लेता कौन सा वाला. हाँ. Tougher है. मुझे तो सवाल पूछने हैं ना. So we begin, कोई नहीं. We begin and then everybody can chip in. हाँ, I सुशांत, हाँ, आप start करो. The new breed of Indian commentations, historians, J.S.I. Deepak, Sanjeev Sanyal, Amish. Commentarians or commentarians, पता नहीं, कोई जो भी. Commentations लिखा हुआ है. Commentators. Commentators. हाँ. यार जो मेरे को अंग्रेजी पढ़नी आती है यार. समझ में कमाल आ हो किसने गई. लिखा है? कौन है? पढ़ा लिखा हाँ, आदमी हूँ यार, इतना भी बुरा नहीं हूँ. हाँ, think tanker है भाई, सबसे Think ज़्यादा पढ़ा लिखा है. हाँ, नहीं थिंक टैंक में पढ़े लिखे होने की जरूरत नहीं होती. Do you think they have been impactful in shaping the India story? हाँ. Look, I think they're starting to make a difference. There is, and not just the big names. These are big names. Yeah. J.S.I. Deepak, Sanyal, Vikram Sampath. Sampath has done some groundbreaking work. And I think they've done remarkable work. They are pushing forward the debate which is now starting in this country, or which has started. They're pushing it forward. They are challenging the, some of the old myths that have been constantly propagated. They're challenging it. But I think we still have a very long way to go before they can actually start shaping the narrative. It's a very good start, but I think what is actually shaping the narrative is, along with these guys, there's an entire bunch of people on social media, nameless, faceless people, who come up with remarkable information. And this is not WhatsApp University. Many of them actually give references to whatever they are quoting. And people are free to go and check. Many of them actually put snapshots of what they are, quoting. And that is actually challenging that old framework which had been made, which was that nice, कि everything was अच्छा यहाँ पर, ये 2014 हुआ, then everything went to seed. India was living in peace and harmony and everything was so nice and peaceful. Those things are now being challenged. So in some ways, social media is extremely toxic, but in many ways, it's extremely democratic. And it has brought in new voices which would have otherwise been suppressed and repressed in the media space, because, the media gatekeepers never allowed people to come in. Correct. But I think the good scholarly work which is being done by these new scholars is quite remarkable. But I think it'll take another maybe a decade or more before really the narrative can be shaped. Yeah. Abhijit, do you agree? Can I? And, Before, yeah, so before Anand, Abhijit. हाँ. Oh, sorry. It's related to No, the no, question. yeah, related to Okay, his then- question. then please. So that's what I thought. Sure. Let's all go through the same Right, questions, got it. and then. So Abhijit, do you agree with this? Because you go to Litfest. Anand also goes to those Litfests, and so do you. You've been doing. All of you guys have been saying what you've been saying for quite some time, but the invites never came your way. It's only now that the invitation is coming. You guys are getting a voice in the sense that you did speak about it, you did write about it, but you didn't appear on TV, you didn't come to those Litfests. Those voices are being heard now. Do you agree with that? And do you think it's a new thing? And does one have to thank Mr. Modi and the new administration which has come into power? One second. 2014? I don't think you should give credit to Mr. Modi, because this government has not done this. Yeah. What has happened is that a climate has been created where people's voices are now being aired. Yeah. Okay. I won't give this government any credit. Okay. It's just technology and some other things which changed, which allowed these voices to come up.
Exactly. Do you think it would See, happen I if there was think another government? it's- Sorry. Would it happen if there was, say, hypothetically, there was an opposition? It hadn't happened in the last 65 years. But they didn't have the technology and the didn't have the democratization. They might not have had the technology, but they had the newspapers, for example. When did the No. newspapers See, allow so any here's the kind of issue. a See, even alternate with viewpoint? newspapers, it was a complete. So today when Yeah. we're looking at Israel, for example, there is not one news channel or newspaper that's reporting accurately. Not one, left or right. Not one is reporting accurately on what's happening out there. You mean Indian newspapers or globally? Globally. Okay. Globally. You actually have to go to the internet, and it's almost like doing primary research, because Twitter is kind of primary research. It's people speaking with their own voices with what they're seeing, and you're seeing how different that is from narratives being generated left and right. Right? Number one. Number two, remember 2014 coincided also with the takeoff of social media, which was responsible to a large extent to bringing down the previous government and truly expressing the feeling of the people. Because remember, Modi was probably the first prime minister who used it directly. Now his Twitter handles become very boring. Well, now for the last 2 days, 2-3 days, become very interesting. Emojis, it's become very interesting. Emoji hai to mumkin hai. हाँ, emoji है तो मुमकिन है. But before that, for the previous 9 years, it's been a very boring Twitter handle. The spark that he had before 2014 is because now he has to act very responsibly, being. No, prime I think minister and after that Third. Modi melody, I think हाँ, it's after become, melody, it's become very it's light. become very light and हमारे जॉर्जिया ने उनका दिल खोल दिया. हाँ, और हमारी जॉर्जिया हो गई अब वो। हमारी जॉर्जिया हो पता गई. नहीं यार, सोनिया जी आपकी ये नहीं हुई, जॉर्जिया आपकी हो appropriate- गई. ये गलत है. I'm taking offense to मैंने this. कभी भी बोला है कि जॉर्जिया जॉर्जिया सोनिया आपकी हमारी किसी- नहीं है. नहीं, मैं पूछ रहा हूँ आपको. नहीं, मैं आपका ये जो इकोसिस्टम है, मुझे इस पर दिक्कत नहीं, है. मैं सोनिया को भी मैं मानता है वो हिंदुस्तानी है, और जॉर्जिया भी भी हिंदुस्तानी है. देखो, जो इटालियन लोग from होता तो है. वासुदेव कुटुंबकम Mino में media believe से हो करते हैं गए. भाई. देखो, From ये- Mino media now you're Melanie media. नो देखो, That's a nice one. That's a nice one. मैं क्या मानता है कि वो जो इटालियन लोग है वो नॉर्थ पंजाब है. ओके, वो लोग पंजाबी की तरह होते There हैं. is no North Punjab. lost. There's East Punjab and West Punjab. अरे इटली नॉर्थ पंजाब है. वो ओह, पंजाबी अच्छा. लोग की तरह होता है, जिंदगी जीता है, जिंदगी एंजॉय करता है, Live life. बहुत like खुल्लम खुल्ला प्यार करता है, खुल्लम खल्ला प्यार करेंगे हम दोनों, and then it's Okay, so you know lost me. they're like Come back. they're like the Italians. So I consider come them back. all this thing. Come Third, back. third important thing in all of this that has happened is, the kind of people have forgotten how repressive the previous UPA regime was. Right, you remember all those nuclear protesters, what happened to them near Kudangulam. People have forgotten, how many journalists were put on a watch list, debarred from social media, this, that. Do you remember? Shivarur and Co, Kanchan Gupta were all on that watch list and things. That has been, there's actually been a lifting of the mahal of fear. You think that Next, because what has journalists happened don't is- say that anyway. We'll get to Next, that. what has happened is, because of social media, all the narratives have started coming out, and people are seeing that you can make money. So a market opportunity has opened up, in which the right-wing voices opposing the government, or rather the socialist sort of Nehru-Gandhian tradition that has been here, are also being heard, which is resonating not just in the electoral this thing, but also the narrative thing. Okay. Fifth, remember, all the old lit fests and media houses still keep everybody out. Let's be very clear about it. They create they create special purpose vehicles so that the twain shall not meet. One is the elite one, which is all the Rambagh Palace suites. Ha, ha. The other one is the chota one, where Trident single bedroom मिल जाता है. ठीक है? His definition of poverty is Trident single bedroom. That's Yeah. the definition of poverty. Breakfast But included. come on. Breakfast included or I no? mean, Trident is poverty level, yeah. Yeah, compared to breakfast- Rambagh. ये किसने बोला ये गरीबों का हो रही है? I'm astounded. Yes. ये You are the अमीर rich को- man. Yeah, तुम अमीर को हो रही हो. No, but Ori, it's the truth. sorry. Ori नहीं, Ori. Sorry. And Ori, so Ori. in that, I think we have to give Modi his due. Maybe Modi did not do it directly, but Modi is a sort of enabler of all. That's what even when Yeah, I I said agree. Modi, I didn't mean like Modi opened it all up. But what I mean is that the right wing got a voice. So now you have that equality. A left wing which has been, which had a stranglehold over the narrative But for so many years. Sixth, and then last now you point. have. But Yeah, sure. that said, I think that, since very specific names were mentioned,
Sanjeev Sai and all these people, we're still in reactive mode because we're fighting back against them. Huh. You understand? We have not come to the narrative setting that drives them crazy. The left has a very strategic tactic that they ignore you completely. Okay. They pick all the buddhus and bhondus and morons from the right and tend to showcase them as representatives of the right. This has traditionally been their technique, that they will completely ignore all the serious voices coming out of there and pick and highlight. And But that's the case even in, say, America, when the right wing, the left wing will say that we are the intellectual elite, whereas the right wing is represented by a Trump. And the problem is, the right still has this need for validation of the left. What I was about to say. Right, because remember, the right in this country is the socially upwardly mobile people. You know, it was Narasimha Rao's reforms that created the BJP victory, technically. Right, that was what created the middle class, which turned nationalistic and wanted the BJP in power. So in many ways, these are a creation of the 1990s, which seek the validation of the 1960s walas. 1950s. अब फिर से वही शुरू हो जाएगा that Narasimha Rao was the closet BJP prime minister. Which that he India was. has. I mean, He was the best what prime is minister wrong BJP in admitting to it? No problem. Absolutely not. What yeah. are you talking about? he The was. two most draconian anti-Hindu decisions or acts to have been purported by any prime minister were done by Narasimha Rao. Supported by BJP. That's not the thing. No? You just said he's a closet Anti-Hindu. BJP. The Babri Places of Masjid Worship fell Act. during Narasimha Rao's tenure. Places But of he's on a Worship POW Act and the Act. Waqf Act. Ah. The two most draconian anti-Hindu acts ever to have been promulgated were done by But Narasimha BJP Rao. walked out. Had BJP not walked out, the Congress never had the numbers. This was a deal done, and It was a Smita ji, deal. you would know about this, and you would know because you at least covered Parliament. The Congress never had the numbers, so it would never have passed had the BJP not walked out. It wasn't possible. This let's give the BJP credit where it's due, but also accept that the BJP was also a part of this. Maybe it politically benefits the BJP today, but they did walk out. And Yeah, in politics, you know, you I have agree. to make these kind of deals. If you want to make politics work, I know where you are coming from, Anand, you know, and there's a lot to, you know, agree with you on what the points which you raise. But, you know, in the rough and tumble of politics, either you can then be so polarized that you're going hammer and tongs at each other and then a system collapses. Or you have to find some kind of via media where you can make things work. There will be many people who will, you know, be on your side who will say Narasimha Rao was, for want of a better phrase, Hindu-phobic. I would say that's a gross exaggeration. No, he was not. He was not. In Yeah, fact, no, I'm not most- saying he was Hindu-phobic. I'm just saying The when administration of people the say that old he was Congress- the But this Anand, thing. you say that even about the current Yes. administration. So that's why I said. Anand, So yeah, let me let's tell you get something. Anand. But I wanted to come back to No, one second. Let me just make one point and then I'll hand over the floor to you. The Congress party was a lot more Hindu nationalistic, Correct. right? And nationalistic also than maybe what even the BJP was, or the old BJP, the Jan Sangh, or whatever you want to call it, right? This Congress party